सो द 100 ड्रेसेस बाय एल बॉजर ईस्टर, ये जो स्टोरी है ये किस पे बेस्ड है? इट इज अ स्टोरी बेस्ड ऑन द ट्रू एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर अबाउट अ गर्ल जिसे टीज किया जाता था बाय हर क्लासमेट्स. व्हाई? बिकॉज शी वाज डिफरेंट. एंड व्हाई वाज शी डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स? बिकॉज शी वाज हैविंग अ फनी नेम. That was Venda Petronaski. This was a funny name for other people, and this was a very funny Polish name. It is said in the story. She was from a poor background. She used to speak very less in the class. She used to wear the same dress, unironed same dress every day to school. So because of that, and when she was asked that how many dresses, I hope you would have many dresses. दो बाकी जो girls थे बच्चे थे उसको चिढ़ाते थे, so she always said that yes, I have 100 dresses all lined up in my closet. I have 60 pairs of shoes. They are also all lined up in my closet. तो ये बहुत ही एक फनी सा एक्सपीरियंस था सबके लिए, तो सब उसका मजाक उड़ाते थे. बिकॉज ऑब्वियसली येस्टरडे वी गेव एन एग्जाम्पल. अगर कोई बेगर आके आपको ये बोल दे क्विकली गिव मी 5-10 रुपीज, जो भी आप मुझे बीच में देना चाहते हैं, बिकॉज माई मर्सिडीज इज अप्रोचिंग सून, सो आप उसका मजाक ही उड़ाओगे ना, बिकॉज आपको लगेगा बेगर है और काम कुछ है नहीं इसके पास, एंड ही सेइंग कि मेरी मर्सिडीज आने वाली है. सो दैट साउंड्स फनी. सो इसी तरीके से शी वॉज ऑलवेज इन वन सिंगल ड्रेस, एक ड्रेस पहनती थी. दैट वॉज ऑल्सो अ फेडेड ड्रेस और बहुत ही अनआयरनड वे में उसको पहनती थी. और वो बोल रही आई हैव 100 ड्रेसेस, सिल्क की हैं, वेलवेट की हैं, ऑफ ऑल कलर्स, ऑफ ऑल पैटर्न्स. हाउ कैन एनी वन बिलीव इट? सबको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही भद्दा मजाक कर रही है. दैट इज वाई शी वॉज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर ऑल, और सब उसका मजाक उड़ाते थे. दे ऑल लव टू मेक फन ऑफ हर. सो यही था. तो इसमें हम आ चुके थे द 3 मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. दैट इज वेंडा जो मेन कैरेक्टर है, उसके अलावा जो 2 मेन गर्ल्स जो उसे चिढ़ाने का काम करती थी, दैट वाज पेगी एंड मैडी. पेगी जो थी शी वॉज अ गुड गर्ल, एंड बट वो उसका मजाक उड़ाती थी. शी वॉज द बेसिकली द प्लानर ऑफ होल दिस फन स्टोरी. एंड सेकेंड वॉज मैडी. मैडी ऐसी थी कि मैडी वॉज ऑल्सो पुअर बट शी वॉज बेटर देन वेंडा, एंड वो पेगी का साथ कभी नहीं छोड़ती थी. शी वॉज नॉट एबल टू लीव हर, एंड वो हमेशा पेगी के साथ रहती थी, वेदर शी लाइक पेगीज बिहेवियर और नॉट, बट शी हैड नो चॉइस, शी हैड टू बी बाय हर साइड. So now starting with the third section. Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Venda. Now what happened? मैडी को ना, मैडी जो थी उसे अक्सर बुरा भी लगता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि आज तो वेंडा इज द पुअरेस्ट वन ओवर हियर, तो ये लोग उसका मजाक उड़ाते हैं. सपोज वेंडा गोज फ्रॉम हेयर, तो नेक्स्ट पुअर पर्सन कौन है? मैं हूं. ये लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे. दैट इज वाई मैडी को बहुत अच्छा नहीं लगता था व्हेन पैगी यूजुअली उसका फन उड़ाती थी ना, मजाक उड़ाती थी, उसकी मजे लेती थी. तो शी वॉज नॉट एट ऑल लाइकिंग इट, बट वो कुछ बोल नहीं पाती थी. सो मैडी से दैट इवन टुडे, वो भी स्कूल के लिए लेट हो गए, बट मैडी बहुत खुश थी. क्यों? क्योंकि उसे लगा अच्छा है स्कूल के लेट हुए, वेंडा नहीं आई, सो उसका कम से कम मजाक नहीं उड़ा. शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली 8 times 8, लेट्स सी. एंड वो उसका दिमाग इतना परेशान था ना कि वो अपनी अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, जो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, वो बहुत ही एब्सेंट माइंडेडली कर रही थी. 8 times 8 एंड लेट्स सी, तो ऐसे सब चल रहा था. She wished she had the nerve to write Peggy a note, because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Venda how many dresses she has." Now, Maddie thought, Maddie की इच्छा थी कि वो Peggy को एक नोट लिखे, ठीक है. एंड उस नोट में वो क्या लिखेगी कि हे पेग, हम चलो वेंडा का मजाक नहीं उड़ाएंगे, विल नेवर आस्क हर दैट हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज. उसने पेगी को नोट लिखने का इसलिए सोचा बिकॉज उसने बोला मेरे में इतना करेज नहीं है कि मैं पेगी को फेस टू फेस ये बात पूछ लूं. When she find her arithmetic, she did start a note too. जैसे ही उसने अपना फिनिश किया अर्थमेटिक का वर्क, उसने पेगी के लिए एक नोट लिखा. Suddenly paused and shuddered. She pictured herself in the schoolyard, a new target of Peggy and the girls. Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old one that Maddie's mother had tried to disguise with new trimming, so no one in the room 13 would recognize it. Now suddenly when she started writing a note to Peggy, suddenly she paused and shuddered. एकदम से उसने ये पिक्चर किया, उसने इमेजिन कर लिया एक सीन दैट शी इज इन द स्कूल यार्ड. एक न्यू टारगेट बन गई है वो पेगी और बाकी गर्ल्स के लिए, और पेगी उसको पूछ रही है ये ड्रेस तुम कहाँ से लेके आई,
एंड मैडी को बोलना पड़ेगा कि ये पेगी की ही पुरानी ड्रेस है जिसपे मेरी मदर ने इसके ऊपर कुछ और नई ट्रिमिंग्स डाल के इसको थोड़ा सा डिस्गाइज कर दिया है ताकि रूम नंबर 13 में इस ड्रेस को कोई रिकग्नाइज ना कर पाए कि ये ड्रेस ऑलरेडी किससे बिलोंग करती है, पेगी से बिलोंग करती है। बिकॉज मैडी जो थी ना वो यूजुअली पेगी के दिए हुए क्लोथ्स ही पहनती थी। सो दैट इज वाई उसने ये काम किया। तो ऐसा उसके दिमाग में विचार आते ही शी जस्ट स्टॉप्ड हर प्लान ओवर हियर। उसने अपना पूरा प्लान जो था ना उसको क्या किया, उसने कैंसिल कर दिया। शी सेड नो, अब मैं इसको नहीं करूंगी। सो इफ ओनली पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन ऑफ Fun off with Wenda. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? Slowly, Maddie tore into bits and notes she had started. She was Peggy's best friend, and Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. Now what happened? She says if only Peggy would decide her own accord. अगर सिर्फ Peggy ही थी वो पर्सन जो डिसाइड करती कि क्या करना चाहिए। स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा। उसने बोला ये पेगी ही है जो ये डिसाइड करेगी दैट वी हैव टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वेंडा बिकॉज और कुछ नहीं हो सकता। सो वॉट डिफरेंस डिड इट मेक? शी सेड कि अगर ऐसा कर भी दे तो इससे क्या डिफरेंस आएगा। शी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड। उसने बोला मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा बिकॉज आई एम पेगीज बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक। और पेगी जो थी पूरे रूम नंबर 13 में पूरी बेस्ट लाइक्ड गर्ल थी। एंड पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, शी थॉट। पेगी ऐसा सोचते थे कि पेगी जो करती थी ना वो सही करती थी। पेगी कुड नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग। पेगी कभी भी कुछ गलत नहीं करेगी। एज फॉर वेंडा शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अपॉन द बॉगिन हाइट्स। वेंडा उसके लिए जस्ट एक गर्ल थी जो बॉगिन हाइट्स में कहीं भी रहती थी and stood alone in the schoolyard और अकेली खड़ी रहती थी। She scarcely ever anything said anything to anybody. The only time she talked with was in the schoolyard about the 100 dresses. Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue and color trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. You would look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. Now for Venda. वेंडा जो थी पेगी के लिए एक जस्ट एक गर्ल थी ऐसे ही जो पुअर बॉगिन हाइट्स पे रहती थी। एंड शी ऑलवेज यूज टू stand alone in the schoolyard and she scarcely ever said anything to anyone, and only time she talked in the school was the time वो कब बात करती थी when she talked about her 100 dresses, जब वो अपनी 100 dresses के बारे में बात करती थी बस तभी वो कुछ बोलती थी, अदरवाइज नहीं। So Maddie remembered that Peggy once told them about two of her dresses. One was pale blue colored dress with trimmings, and the second was, she said that it was a brilliant jungle green color with a red sash. And you would look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. और girls ने बोला हाँ तो उसको तुम पहन लोगी तो तुम बिल्कुल क्रिसमस ट्री जैसी लगती होगी ना, ग्रीन एंड रेड। So thinking about Venda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. And now what happened? उनके स्कूल के अंदर एक कलरिंग कॉन्टेस्ट हुआ, ठीक है। अब उस कलरिंग कॉन्टेस्ट में क्या हुआ, आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ ड्राइंग्स देनी थी। सो थिंकिंग अबाउट वेंडा और उसकी 100 ड्रेसेस, दोस वर ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, मैडी वंडर करने लगी कि ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट में कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स ये जो कंटेस्ट था इट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटरबोट्स। Probably Peggy would win the girls medal. Peggy drew better than anyone else in the room, at least that's what everybody thought. She could copy a picture in a magazine or film star's head so that you could almost tell who it was. Oh, Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winner, then they would know. Now they says that thinking about Venda and the 100 dresses, those were all lined up in the closet. मैडी जो थी वो थोड़ा सा वंडर करने लगी, वंडरिंग अबाउट व्हाट, मैडी स्टार्टेड वंडरिंग वेदर कि क्या जो ये उसने ड्रेसेस बनाई हैं जो हमारा कंटेस्ट होने वाला है ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, उसका क्या होगा, हु इज गोइंग टू विन दिस कंटेस्ट। बिकॉज फॉर गर्ल्स इस कंटेस्ट के अंदर क्या करना था, डिजाइन करनी थी ड्रेसेस
and for boys it was to design the motorboats. And Maddie said that obviously no choice, Peggy is the one जो सबसे best drawing करती है, Peggy is the one whose drawings are the best. तो obviously कौन यहाँ पे win करेगा? Obviously Peggy is going to win. ठीक है, she said obviously Peggy is going to win because Peggy will win the gold medal because she drew better than anyone else in the class. And at least what everyone, this was the thing that everyone also thought. And she said that Peggy was so creative at her drawing part that she is able to copy a picture from a magazine or a face of a film star, head of a film star, so that almost anyone could tell that whose face it is or whose head it is. So Maddie was sure that Peggy would win, and well, tomorrow they said the teacher was going to announce the winner. They were saying that tomorrow the film teacher is going to announce the winner, and then they would know, and then they would get to know that who has won. Next day it was drizzling. Now next day what happened? क्या हो रहा था? Next day it was drizzling. Drizzling मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है ना, बारिश जैसे हमारे आज हो रही है यहाँ पे, वही. Next day it was drizzling. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Now, naturally, on the day like this, they didn't wait for Venda Petrinoski on the corner of the Oliver Street. अब जब बारिश होती थी तो उनको भी वेट करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता था, whether they should wait or not. So देखो, next day it was drizzling. Maddie and Peggy वो बहुत ही hurriedly जल्दी जल्दी स्कूल गए under Peggy's umbrella. And naturally इस डे पे कोई भी वेंडा का वेट नहीं करेगा on the corner of the Oliver Street. The street जो बहुत ही far far away थी under the railroad tracks and up the hill led to Boggin Heights. Anyway, they weren't taking chances on being late today. वो late नहीं होने वाले थे because today was important, because आज बहुत important day था. And what was important in today's day? आज रिजल्ट अनाउंस होने वाला था ऑफ द विनर ऑफ द ड्राइंग एंड कलरिंग कंपटीशन. एंड डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर टुडे? आज पेगी. पेगी ने पूछा, डू यू थिंक मैडी दैट मिस मेसन इज गोइंग टू अनाउंस द विनर टुडे? ओह, आई होप सो. द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी. ऑफ कोर्स यू विल विन, पेग. होप सो, सेड पेगी eagerly. Now, Maddie said, oh, I hope so, and minute we get in, we'll be able to hear the results, and of course, you will win, Peg. So what's to worry about? Hope so. Peggy ने बोला, hope so, बहुत eagerly बोला. The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. There were drawings all over the classroom, on every ledge and windowsill, dazzling colors and brilliant, lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. There must have been 100 of them all lined up. There must be the drawing for the contest. They were. Everybody stopped and whistled and or murmured admiringly. Now what happens? The minute they entered the classroom ना, they stopped short and gasped. वो बिल्कुल, they all stopped short. वो सारे के सारे हैरानी से वहां पे खड़े रहे. And they kept on looking कि oh my god, what is it? ये क्या है? वहां पे क्या था? There were drawings all over the room, on every ledge, on every windowsill, dazzling colors and brilliant lavish designs थे, all drawn on great sheets of wrapping paper. सारे के सारे on the great sheets of wrapping paper पूरी dresses थी. And there must have been 100 of them all lined up. 100 of them थी वहां पे dresses, and they were all lined up. These must be drawings for the contest. They were. ये may be drawing contest के लिए ही जो थी dresses, drawings थी for the contest, and they were, yes. And everybody stopped over there. They whistled because it was so beautiful dresses, and all of them whistled and they all murmured admiringly, तारीफ कर रहे थे सब उसकी. Now what happened? As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winner. Now जैसे ही class assemble हुई, Miss Mason ने winner announce किया, and see who the winners were. Jack Biggles had won for the boys. Jack Biggles नाम का एक boy था who was the winner in the boys category. Okay. She said, and his design for an outboard motor was on exhibition in room 12, along with the sketches by all the other boys. And the teacher announced that he had won for the boys, she said, and his design for an outboard motor was on exhibition in room number 12, along with the sketches by all other boys.
As for the girls, she said, and now she says, as for the girls, she said, although just one or two sketches were submitted by most, on almost एक या दो sketches ही almost maximum ने ऐसा ही submission किया था. One girl and room number 13 should be proud of her. और एक girl है जिसके लिए पूरा room number 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 design. और ये one girl जो है ना, she actually drew what 100 designs, all different and all beautiful. सारे के सारे different और सारे के सारे बहुत ही beautiful. ठीक है. In the opinion of the judges, any one of the drawing is worthy of winning the prize. Now he says, and in the opinion of the judges, any one of the drawing is worthy of winning the prize. और कोई भी ड्रेस उठा लो, कोई भी डिजाइन ड्राइंग उठा लो इसकी, it was worthy of winning a prize. And I am happy to say that Venda Petronaski is a winner for the girls medal. And I am very happy to say, teacher was saying that Venda Petronaski is the winner, or is the winner in the girls medal category, that she is the winner of the girls medal. Now the teacher was very happy to announce this. Teacher, she really liked her, and you can see the dresses in the pictures, they are really nice. So maybe these might be pictures for us. Okay. Yes. So next is, unfortunately, Venda has been absent from school for some days and is not there to receive the applause that is due to her. Now, unfortunately, जो Venda है, she has been absent from the school for some days and she is not there to receive the applause, and that is due to her. कौन सा applause? The winning applause, and as well as the trophy, and as well as the medal. Trophy नहीं, medal that she was to get. Let us hope she will be back tomorrow. Now let us hope कि वो कल वापस आ जाए. Now class, you may file around the room quietly and look at the exquisite drawing. Now file around the room quietly means, now the teacher said, now class you can move around the room quietly. आप देखो सारी paintings को देखते जाओ and look at the exquisite drawings. That is, look at the very extremely beautiful and well made drawings nicely. The children burst into applause. बच्चे जो थे, they suddenly and spontaneously they just clapped their hand, and even the boys were glad to have the chance to stamp on the floor. Even the boys also had the chance कि वो भी floor पे stamping करने लगे. They were also happy. They were also showing their excitement and put their fingers in their mouth. और अपनी जो फिंगर्स थी ना, दे वर सो स्ट्रिकन, वी कैन से दे वर सो एक्साइटमेंट स्ट्रिकन कि उन्होंने भी अपनी फिंगर्स उनके माउथ में डाल दी. एंड दे विसल्ड, और उन्होंने भी एज एन अप्लॉज अपनी तरफ से हैंड क्लैप नहीं करके दे विसल्ड फॉर हर. एंड दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, हालांकि वो ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे, बट स्टिल दे फेल्ट लाइक विसलिंग एंड शोइंग देयर वे ऑफ हाउ दे आर गोइंग टू अपलॉड फॉर दिस winning or such an beautiful admiration. Look Peg, whispered Maddie. Maddie ने बोला, look Peg, देखो, there's that blue one she told us about, isn't it beautiful? उसने बोला, देखो ये रही वो blue dress जिसके बारे में उसने हमें बताया था. Isn't it beautiful? बहुत beautiful नहीं है क्या ये, है ना? Yes, said Peggy. Peggy ने बोला, हाँ बिल्कुल है. And here's that green one, उसने बोला, और ये रही वो green वाली dress जिसके बारे में उसने बताया था. Boy, and I thought I could draw. Now she says, boy, and I thought I could draw. और मैं सोचती कि मैं draw कर सकती हूँ. Now she had drawn so beautifully. Okay. So now, see, अब ये था यहाँ तक chapter. Now we will see the comprehension check part, that why didn't Maddie ask Peggy to stop teasing Venda and what was she afraid of? उसने पेगी को, जब उसने पहले डिसाइड किया दैट शी इज गोइंग टू राइट अ नोट टू पेगी कि पेगी नाउ स्टॉप टीजिंग वेंडा, वेंडा को छेड़ना बंद करो, बट व्हाट वाज शी अफ्रेड ऑफ, लेकिन वो किस चीज से डर गई कि उसने ऐसा करने से स्टॉप किया, उसने ऐसा नहीं किया. यस, एनीवन हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? Yes, Karan will answer the question. So question number 1, why didn't Maddie ask Peggy to stop teasing Venda and what was she afraid of? Maddie didn't ask Peggy to stop teasing Venda because she pictured herself, उसने अपने आप को पिक्चर कर लिया वहां पे, that she has been crowded in the front yard from all around with
Peggy and other girls, and she is being made fun of because Peggy was asking her that who has given you this dress, from where have you got this dress, and Maddie is replying कि ये dress that this is given by you and my mother has disguised it some way कि लोग इसको identify नहीं कर पाए anyone in the room 13 that it is your dress. तो ऐसा कुछ हो जाए, she was afraid of this humiliation and that is why she stopped asking, she didn't ask Peggy to stop teasing Wenda because उसे खुद के बारे में ही डर लगने लग गया था. Now the second is, who did Maggie think would win the drawing contest? Why Maddie thought that Peggy is going to win the contest, and it is very simple because she was the most liked girl in the room number 13. She did draw better than anyone else in the room, and शी सेड कि मैडी का ऐसा थॉट था कि पेगी से बेटर तो कोई ड्रॉ कर नहीं सकता, एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी सिंपल दैट पेगी इज गोइंग टू बी द विनर ऑफ दिस ड्राइंग contest. Now third question, who won the drawing contest? What had the winner drawn? At last, who is the true winner? The winner of this drawing contest was Venda Petronaski, and what she had drawn, she had drawn the 100 dresses, all beautiful and all of different types. Okay, so now next scene, the next questions, thinking about the text. How is Venda seen as different by other girls and how do they treat her? वो different क्यों थी and how do they treat her? She was different because she was poor, she was having a funny name, and they all treated her in उस सब उसको कैसे treat करते थे? They all humiliate her and made fun of her. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज वेंडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम? वेंडा कैसा फील करती थी ड्रेसेस गेम का? बहुत ही बुरा फील करती थी. एंड व्हाई डज शी से शी हैड 100 ड्रेसेस? और वो क्यों बोलती थी दैट शी हैड 100 ड्रेसेस? बिकॉज शी रियली हैड 100 ड्रेसेस. उसके पास सच में 100 ड्रेसेस थी. एंड व्हाट वर द ड्रेसेस? दोज वर द ड्राइंग ऑफ 100 ड्रेसेस. दे वर ऑल लाइंड अप इन हर क्लोजेट. दैट इज वाइज वो इस गेम को बहुत ही कंसिडरिंग फील करती थी. शी वॉज एक्सट्रीमली मूव्ड बाय द क्लासमेट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हर. Why does Maddie stand by and not do anything? How is she different from Peggy? And why? तो वो different क्यों थी? So look at in the bracket why Peggy's friendship important to Maddie and why, which lines in the text tell you this. And Maddie जो थी उसको अच्छा लगता या नहीं लगता? Why she was to stand by Peggy and she could not do anything? ऐसा क्यों होता था? Because Maddie जो थी वो कभी अटेम्प्ट नहीं करती थी कुछ भी करने का, बिकॉज उसे हमेशा डर रहता था दैट पेगी विल मेक हर द नेक्स्ट टारगेट. बिकॉज मैडी फील्स annoyed as she herself belongs to a poor background, जिसके कारण which made her hesitant to speak unnecessarily in the class. And unlike Peggy who belongs to a well of rich family, मैडी बहुत embarrassed और बहुत ashamed फील करती थी by the Peggy's question which she used to prop Venda. So probably this is the reason कि जो मैडी थी वो थोड़ा सा डिफरेंट थी उससे. शी वॉज अर बेस्ट फ्रेंड, बट मैडी एडमायर्स पेगी फॉर एवरीथिंग, फॉर बीइंग एक्सेप्शनली वेल एंड लाइक्ड बाय ऑल क्लासमेट्स. बट हाउएवर शी डिड नॉट डेयर टू कॉन्ट्रडिक्ट पेगी बिकॉज उसे ऐसा लगता था द डे आई कॉन्ट्रडिक्ट पेगी शी इज गोइंग टू मेक मी द नेक्स्ट टारगेट एंड शी इज गोइंग टू मेक फन ऑफ मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. Now, the last question is, what does Miss Mason think of Venda's drawings? And what do the children think of them? How do you know? Now, what does Miss Mason जो थी उन्होंने क्या सोचा वेंडा की ड्राइंग्स के बारे में? And what do the children think of them? और बच्चों ने क्या सोचा and how do you know them? बताओ. Now, obviously, इट इज दैट मिस मेशन जो थी उन्होंने चेरिश किया था ड्राइंग्स ऑफ दी 100 ड्रेसेस दोज वर मेड बाय वेंडा. एंड उन्होंने सारे क्लासरूम पूरे क्लासरूम में बच्चों को इन्फॉर्म किया रूम नंबर 13 में दैट टू बी प्राउड ऑफ वेंडा एज शी ड्रू 100 ड्रेसेस, बिकॉज रेस्ट हर बच्चे ने एक दो ड्राइंग्स दिए थे एंड शी वॉज दी ओनली गर्ल वी शुड फील प्राउड ऑफ. होल रूम नंबर 13 शुड फील प्राउड ऑफ दैट शी हैज ड्रॉन दी 100 ड्रेसेस एंड शी ड्रू देम so beautifully. So Miss Mason was very delighted to proclaim that the winner of the girl was Venda in the drawing competition.
And initially, everyone gets started to see a drawing, but later on, they admire this extremely beautiful creative piece and applause and with whistles. So this was, we can say, with the question and answer. So this was really very interesting. अब इसके आगे भी कुछ होता है. Now we have to see now the sequel of this story is remaining. So this second part जो है वो हम we will be starting tomorrow. The second part 100 dresses part 2 will be starting tomorrow, and उसमें एक तरह से इसी का second part है. The story is not finished yet, it's just one part, it's the interval we can say, and after the interval जो next part है वो हम कल करेंगे. So we can say that this story is based on the true experience of the author about a girl whose name was Venda Petronaski, and she was poor and she was a very different girl, and that is why all the other classmates teased her. राइट. सो मैगी एंड पैगी वर टू अनदर, जो थी एक और दो गर्ल्स थी, जिसके अंदर मैडी जो थी शी वॉज अगेन अ पुअर बट बेटर देन वेंडा, बट शी वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ पैगी. एंड पैगी जो मोस्ट लाइक्ड गर्ल थी इन द होल क्लास, एंड शी वॉज फ्रॉम अ रिच फैमिली. वो बेसिकली सबका मजाक उड़ाने का काम करती थी. एंड व्हाट हैपेंस, वन डे ड्राइंग कंपटीशन हुआ एंड हर विनर वाज कौन थी, Venda thi, because Venda usually says that I have 100 dresses, I have 100 dresses. And what actually were the 100 dresses? The 100 dresses were the drawing of those 100 beautiful dresses. And she won the competition. And before that, तो सब उसका मजाक उड़ाते थे. But when people saw that these were the beautiful 100 dresses which she usually talked about, they were at first they were startled by it, but later they all were clapping for those drawings of the dresses about which Venda जो थी जिनके बारे में बात करती थी. जो टीचर थी, she was also very happy, and surprisingly she announced the result, and she was very very happy and proud of Venda. And students were all also clapping for those drawings of dresses about which Venda was talking to them while she was being teased by her classes. But unfortunately, she was not present over there to receive the medal herself. Now, where was she? Why was she not present in the school to listen to the result being announced and to receive the prize and the gold medal? Where was she? Now, this thing we are going to study in the second part that we'll be doing today. So this is all for today's class. So if there are any queries, you can ask me. आप queries अपनी पूछ सकते हैं in the class or in any way. आप कैसे भी उन queries को मुझसे पूछ सकते हैं. So this way we can say that जो हमारा chapter है, that is the 100 dresses part 1 is complete, and we'll in tomorrow's class we'll be doing the 100 dresses part 2. Till then, just go through the text. I hope you will be able to understand it nicely. If any queries, just sort them out और हम उसको कल solve कर लेंगे. Okay? Till then, just take care of yourself.